where the presentation is giving, I would like to start. So basically, on last Eid, I was sitting with my parents and few uncles. So the discussion came up that about the electricity shortage and power issues in Pakistan and roaring electricity bills. So there is a need to have a smart application so that we can monitor and track the number of electricity units we use at our homes. But one of the uncles who were a CEO told us that he don't have enough time to focus on this system. So being a computer science student, something popped up in my mind. The system should be automatic and should deliver the results of monitoring system via text message to the CEO. So he can have a monitoring system of all the appliances running at his factory via a single text message. So basically, everyone in Pakistan, in overall whole world, जो कोई भी electricity use करता है, ये उसकी काम की चीज है. Starting from a person who lives in a house, leading up to a electric supply company like WAPDA. एक सिंपल सी ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप साइन अप करते हैं, अपना फोन नंबर डालते हैं और आप जितने यूनिट्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो डालते हैं. उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आप एक डिवाइस लेट्स आपके में एक बॉयलर चल रहा है, आप उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं. और अगर लेट्स अज्यूम आपके पास मुख्तलिफ चिलर प्लांट्स हैं, बॉयलर्स हैं, और आप पूरे का सम देखना चाहते हैं कि मेरा ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, तो आप वो भी देख सकते हैं. इट्स ए सिंपल सेंसर जो आपकी डिवाइस के साथ अटैच होगा और वो कंटिन्यूअसली रीडिंग्स ले रहा होगा जब आपकी डिवाइस चल रही होगी, और वो रीडिंग्स बैक एंड पे सारी प्रोसेसिंग के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उससे मल्टीप्लाई होकर आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो जाएगा. आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आप साइन अप करके लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि इस स्टेज पे इतने यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं हर एक डिवाइस के अगेंस्ट और ओवरऑल भी. और उसके अलावा आपको कॉन्स्टेंटली एक टेक्स्ट मैसेजेस भी आते रहेंगे कि आज आपके पूरे दिन का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतनी थी, कल इतनी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन फैक्ट्रीज हमेशा ये होता है कि जब एक इक्विपमेंट या एक मशीन हीटअप हो जाती है तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करती है और ज्यादा पावर यूज करती है. सो इफ वी कैन समहाउ इनकॉर्पोरेट द टेम्परेचर मॉड्यूल कि आपको पता लग जाए कि टेम्परेचर मशीन का ज्यादा हो गया है और आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाए कि फिलहाल इसको आप बंद कर दें, थोड़ी बार भी कूल अप हो जाए तो आप तब इसको यूज कीजिएगा. तो उससे आपकी एनर्जी कंजम्पशन एफिशिएंटली एनर्जी यूज हो सकती है. उसके अलावा जब आपके पास मशीन के अंदर एक डेटाबेस आती जा रही है और आप एक यूजर को देख रहे हो कि इसकी मंथली यूटिलाइजेशन ऐसी है, तो आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द डेटाबेस कि आप ऐसे अपनी मशीन को यूज करें तो एफिशिएंटली आपके बिल्स भी रिड्यूस होंगे और ओवरऑल आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होगी. इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज लाइक वापडा, हम लोगों को महीने के आखिर में एक बिल आ जाता है जिसकी बैक साइड पे लिखा होता है अगर आप रात के वक्त बिजली यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी और अगर दिन के वक्त करेंगे तो कम आएगी. जबकि बैक एंड पे उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे ऐसा होता हो. तो हम एक सेंसर यूज करके ये जज कर सकते हैं कि दिन है या रात है और अकॉर्डिंगली टैरिफ रेट्स अकॉर्डिंगली मैनेज करके उसको एक बिल अमाउंट जनरेट कर सकते हैं. उसके अलावा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पता लग जाता है कि अगर एक मीटर आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है और यूनिट्स एक मिनट में इतने ज्यादा ड्रॉ हो रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, समथिंग फिशी. तो आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रही है. तो दिस कैन ऑल्सो बी सेव. लास्ट स्लाइड प्लीज. The last thing I would like to highlight कि right now the system WAPDA is using वो ये है कि एक एक घर में जाके वो आपके मीटर रीडिंग्स लेते हैं और उसके बेसिस पे बिल जनरेट करते हैं. तो we can also help WAPDA in that system के जिसमें वो आपका हर एक मीटर के साथ, घर के मीटर के साथ एक सेंसर लगा होगा और आपके पास रीडिंग्स उनके ऑफिस में आ रही होंगी. एट द एंड आपका कंप्यूटर ही उसको मल्टीप्लाई करके बिल जनरेट कर देगा. तो जो आपकी ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वापडा की या इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की वो भी डिक्रीज हो रही है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि डेटा ऑपरेटर जाके लेता है, उसको मैन्युअली टाइप करता है, एरर्स आ सकते हैं.
जो ओवरऑल जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो मेरा बिजनेस मॉडल है, वो सर्विस बेस्ड है. जो भी हाउस होल्ड में कोई यूज कर रहे हैं, मैं सर्विसेज उसको मंथली बेसिस पे उनको चार्ज कर रहा हूँ. और जो हाउस होल्ड है उनकी चूंकि ओवरऑल कंजम्पशन कम है तो उनको इसका कम फायदा है, लेकिन फायदा है. इंडस्ट्रीज चूंकि उनके बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो उनको ज्यादा फायदा है. और वापडा को जो फायदा है वो बेसिकली उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और एफिशिएंसी में है. और दैट्स ऑल. आई वुड लाइक टू कॉल हसन टू गिव देम. Thank you, Umair. So out of all of the features that Umair has mentioned, so actually we couldn't actually implement all of them, but we have actually implemented one of them, which is actually the crucial one and the important one, which is actually communication of information to the owner or the user, or which is actually using our app or the service. So first the user will enter all the information, which is his or her phone number, and then the electricity bill, which is actually the maximum number of units that he or she can afford to consume. And then all the data will be submitted and will be stored. After that, so go on to the next thing. We actually simulated the sensor data that already Umair has mentioned, that we will be taking data from sensor. So we simulated the randomly the sensor data through randomly generating numbers, which you can show. So these are the units. When the unit exceeds the limit that is provided by the user, which is currently 80, so there is a message that units has exceeded. It's up to the user if he or she comes to that portal and see that how many units have been consumed. It's up to that person. But if he or she doesn't want to, that's totally fine, because that is everything is happening at back end. So if the units exceed, which is like 134, which is greater than 80, a message is generated which tells that which of the equipment is exceeding the units consumed, and that message is transmitted to the consumer or the user which is using that service. So actually I have he actually entered my number, and see, this is 134, and if you can see, this is 546, and if you want to see, I can show you. Can you show the picture so everyone can see that? Okay, so this is actually the same text message that you are getting right now. Along with this, we provide this facility or the functionality that if you want to turn that thing off, you can turn that off by just replying to that SMS, which is press 1 to turn that on AC off. So this is just for a demo, which is actually catering just AC, but you can always include refrigerator or anything. The plus point of this app is that if we connect this sensor with the whole house meter, it will eventually connect all the things. I mean, it will read all the values, summing up all of the units being consumed in the house. But unfortunately, of course, that will be difficult to implement, but it can be implemented to turn. I mean, that's insane if you will just completely turn off all the equipments of the house. So the last option, that will not be very efficient to use. Okay, thank you so much. you. If you have any questions? Any questions? Riddles? No, thank you.